Hola chicos, bienvenidos a este canal. Hoy vamos a aprender estos verbos en español. Entonces, vámonos. आज मैं आप लोग को ये सिखा रहा हूं कि वर्ब्स कैसे कॉन्जुगेट किया जाता है स्पेनिश में. आई यूज्ड स्पेनिश प्रीवियसली, जैसे इंट्रोडक्शन दिया आप लोग को. अब मैं इस क्लास में आप लोग को चालू करूंगा वर्ब्स कैसे करके ये किया जाता है कंजुगेशन. फ्रॉम नाउ ऑन आई विल ट्राई टू स्पीक इन 3 लैंग्वेजेस इटसेल्फ. एक है इंग्लिश, एक है हिंदी और एक है स्पेनिश. 2 आई विल राइट इन स्पेनिश कि आप लोग को वो मेंटली बने, मतलब आपके अंदर में वो जो मतलब समझने का शक्ति है वो बने इसके लिए. सो चलिए आज चालू करते हैं इस चीज को और अपने कॉपीज और पेन लेके बैठ जाइए. सो इन दिस क्लास, आज के क्लास में हम लोग स्पेनिश को समझेंगे कि वो है क्या, वो चीज क्या है, एज इन फॉर हाउ इट इज रिटन एज अ लैंग्वेज. अगर हम लोग लैंग्वेज को लिखना ही नहीं जानेंगे तो हम लोग उसको यूज भी नहीं कर सकते. बोल तो बाद में रहेंगे, उसको पहले लिखना सीखना पड़ेगा, उसको पढ़ना सीखना पड़ेगा. तो लेट्स डू इट. कैसे? टुडे ये जो क्लास है इसको हम लोग स्पेनिश में क्या बोलेंगे? क्लासे de gramática. क्यों? मैं बोलूंगा बाद में. Gramática. So, en clase de hoy vamos a aprender unos casos de conjugación de los verbos en español. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है in this class we are going to learn some of the cases of conjugation of the verbs in Spanish. अब कौन सा verbs हो सकता है, क्या कैटेगरीज है, वो भी आप लोग पूछिएगा जरूर से. सो सेकेंड लाइन उसका ही है. Hay 3 formas de verbos en español que terminan con los sufijos er, ir, er. इसका मतलब होता है there are 3 forms of verbs in Spanish which ends with the suffixes er, ir and er. अब उसके बाद आपको ये क्वेश्चन आएगा कैसा वर्ब, कौन सा वर्ब, जरूर से. सो नेक्स्ट लाइन को आप अगर फॉलो करते हैं, por ejemplo, hoy vamos a ver y vivir. आप अगर यहां देखेंगे आज हम एग्जाम्पल में क्या पढ़ेंगे? er, er, ir. देखिए er, er, ir ये 3 टाइप का वर्ब एंडिंग होता है. स्पेनिश में वर्ब एंडिंग से हम लोग वर्ब को चुनते हैं कि वो कौन से क्लास का वर्ब है. इसका भी एग्जांपल अभी दिखाएंगे. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्ब. लिख लीजिए अपने कॉपी में er, ir और er जो कि एंड होता है. उसमें से एग्जांपल hablar जो कि er से एंड होता है, comer जो कि er से एंड होता है और vivir जो कि ir से एंड होता है. ये सिर्फ 3 एग्जांपल्स ऑफ द 3 क्लासेस ऑफ वर्ब्स है. इसके बाद इरेगुलर वर्ब्स है, बहुत सारे वर्ब्स है जो कि है. आज हम लोग ये तीनों के ऊपर थोड़ा देखेंगे कि कैसे करके ये एक्सपैंड होता है, वो भी प्रेजेंट टेंस पे. मतलब आज हम लोग प्रेजेंट टेंस करेंगे. जैसे हम लोग एडवांस क्लासेस में जाएंगे वहां पास्ट टेंस, इम्परफेक्ट टेंस, उसके बाद और भी जितना भी है सब मतलब हम लोग देखेंगे. तो तब तक के लिए चलिए इसको देख लेते हैं. सो वी आर गोइंग टू सी 2 वर्ब्स इन AR फर्स्ट. So one of that is hablar. Hablar is to speak. And when we see all these things in the pronouns and what is the conjugation of the verb in that pronoun, we will see that yo, which is I in English, I, this is you, this is he, she, they are something like that, we, you all and them all. So these are the English pronouns, these are the Spanish pronouns, and we can see that conjugation happens like hablar, this to AR, which is AR, this to gets substituted by something which is O. Here we can see that which is substituted by O, then us, then a, then amos, then ais, then an. So this is the formula to substitute the to speak. It's the root verb. It's the root verb. This is the root word. Then we take this verb and substitute it with O to say it in first person singular number, which is I speak, yo hablo, you speak, tu hablas, she speak, he speak or they speak, él habla, ella habla or usted hablas. Like that. Habla, habla, habla. We can use habla
with all these three forms, then we, nosotros or nosotras hablamos, vosotros or vosotras habláis, and ellos, ellas, ustedes hablan. So this is one of the word which we have conjugated. Now see, let's take another example. You could, what if that one of the verb is like this and there is another verb which has different like conjugation? We have this here, which means here to speak. So you could say me that one is hablar, and maybe Rohit sir, this is the formula for that. What is another example of the same AR verb which goes like this? There is this to speak, then we have this to teach, enseñar. Enseñar. This is N with double N sound. So we say it in Spanish, Enseñar. Enseñar is to teach. Let's do the same thing with it. Yo enseño, like hablo. Tú hablas, like, and we will also do it with the enseñar word, which is enseñas. Él, ella, usted habla, enseña. Nosotros, nosotras hablamos, enseñamos. Vosotros, vosotras habláis, enseñáis. Y ellos, ellas, ustedes hablan, enseñan. You see, all the things which actually follows in the AR verb goes like this: o, as, a, amos, ais, an. This is for most of the verb. There are irregular verbs. When we will do that irregular verbs, we will also do this kind of cases where the things actually differ in some of the cases, but it would be mostly the same. So this is the AR verb. Now we will take an example of IR verb, then we will see the ER verb. So the next word which we are going to focus here is an ER ending word, which is comer, which means to eat. आप लोग खाते हो खाना, so वैसे ही स्पेनिश में उसको comer बोलते हैं, to eat. तो अगर हम लोग देखें to eat, ये एक ER ending verb है, ER ending verb. इसके पहले हम लोग क्या किए थे? AR ending verb जरूर से, so ये ER ending verb है. Pronouns अगर देख लेते हैं, if we see the pronouns here, we are going to see that I, you, he, she, they, we, you all and them all, yo, tú, él, ella, usted, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas, ustedes. इसमें क्या आ जाएगा? The first will be como, yo como, yo como, tú comes, él, ella, usted come, nosotros, nosotras comemos, vosotros, vosotras coméis, and ellos, ellas, ustedes comen. For example, if I say ustedes comen carne, इसका मतलब क्या होता है? Do you all eat meat? इंग्लिश में ये होता है, डू यू ऑल ईट मीट? उस्तेरेस कोमेन कार्ने, दिस इज दिस वर्ड उस्तेरेस. यहाँ मैंने स्पेसिफाई नहीं किया एजस एजस उस्तेरेस होगा कि नहीं, मैं उस्तेरेस लिख दिया, मतलब इट कंप्राइजेस ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल टुगेदर, सो वी यूज उस्तेरेस. उस्तेरेस कोमेन कार्ने, डू यू ऑल ईट मीट? दिस कोमेन we use. Now another example, yo como mucha verduras. I eat a lot of vegetables. Yo como muchas verduras. I eat a lot of vegetables. So यहाँ मैं देख रहा हूँ जो कोमो, यहाँ देख रहा हूँ उस्तेरेस कोमेन, एकदम लास्ट वाला, एकदम फर्स्ट वाला ये यूज कर. सो दिस इज द यूसेज ऑफ ER वर्ब. प्लीज राइट इट डाउन, पॉज करके नेक्स्ट वाले वर्ब में जाते हैं. Entonces en este parte del video vamos a ver cómo se conjuga este verbo finalmente en español. This word is vivir. Vivir means to live. To live. Like बचना, जिसको हम लोग बोलते हैं ना हिंदी में बचना, to live. So
here we see aquí. Aquí is again here in Spanish. Here we see that I conjugates to vivo. Then we can see that you conjugates to vives. Él, ella, usted vive, nosotros vivimos, vosotros vivís, and ellos, ellas, ustedes viven. If we see here, for an example, how we write, it is as like ER verbs, but just a little, like that there is a little difference, that this verb is, there it is come is, here it is vivis, not viveis, something like that. Here it's vivimos, there is comemos. Like it's not that, only two differences in conjugation you can see is these two verbs. Otherwise it's all the same in ER and IR in regular verbs. Let's take an example of this. One, if we see an example, yo vivo en España. I, which actually say I live in Spain. Otherwise we can also say usted vive en Colombia. Do you sir live in Colombia? So this kind of places we can use vive, then vivo, yo vivo, usted vive, this kind of thing. This is example of all these conjugations we have learned. In summary, if we see, we have learned today AR, ER and IR verbs, how to conjugate them. Very basic, very like rich of information, but very basic. You can do by yourself. Just an example how to do it. Now that you know it, in your copy you could just go and write all this formula of actually doing it, and then I'll give you an homework for that, which is to take some of the verbs from the internet, which is regular verbs in these categories like AR, ER and IR, and conjugate it by yourself, and let's see that you can do it or not. And do write in the comments below what you have done. It will also prove us like you have done something for yourself. And do like and subscribe if you like this video, this part of the video. It's very informative in today's video. If you like it, do subscribe and share it with your friends, that they also come and join us in this Fusion Academy. Again, I'll say we have an app and we are going to launch this very soon, so please just stay tuned for that, and we will tell you how to join there for the classes there. So in today's video, let's end here, and I'll see you in the next one.